Hello there. Today we are going to cover previous year questions asked by UPSC related to the topic Panchayati Raj and public policy. So starting with Panchayati Raj, question number 1. Which one of the following uh, marker? Which one of the following is incorrect in respect of local government in India? That is option B. That 30% of seats in local bodies are reserved for women. 13 this is 33% seats should be reserved for women in local bodies, and this is according to 73rd Amendment Act 1993 under the Article 243D, which ensure that 33% of the seats in local bodies are reserved for women. All other options are correct. Moving to question number 2. What is the system of governance in Panchayati Raj setup? तो किस टाइप का सिस्टम है? There is three tier structure of local government at the village, block and district level. Or according to 73rd Amendment, the Panchayat has three tier structure in which village, district and intermediate panchayat, which stand between the village and district panchayat in the state where the population is above 20 lakhs. So answer C is the correct. Moving to third question. Panchayati Raj was first introduced in India in October 1959 that is introduced in the state of Rajasthan and from the Nagaur district. Question number 4. In the new Panchayat Raj Bill enacted in 1993, there are several fresh provisions and deviating from the past. Which one of the following is not one such provision? That is the regulation remuneration to the Panchayat member so as to ensure their punctuality and accountability. ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है. रेगुलर रेम्यूनरेशन टू द पंचायत मेंबर सो एज टू एंश्योर देयर, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनको कुछ दिया जाए रेम्यूनरेशन ऑफ. क्वेश्चन नंबर 5. ए कॉलेज स्टूडेंट डिजायर टू गेट इलेक्टेड टू द म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ हिज सिटी. द वैलिडिटी ऑफ हिज नॉमिनेशन वुड बी डिपेंड ऑन द इम्पोर्टेंट कंडीशन अमंग द अदर्स दैट. इनमें से कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? कि उनकी कंडीशन ये होनी चाहिए हिज नेम फिगर्स इन द वोटर लिस्ट, उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए. एंड क्वेश्चन नंबर 6. मैच लिस्ट विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. In list 1 we have the local bodies and list 2 we have state as in year 1999. जिला परिषद at the सब डिविजन लेवल, और इनको मैच करना है. तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी. कैसे कि जो जिला परिषद है सब डिवीजन लेवल वो असम के अंदर, एंड मंडल प्रजा परिषद इज इन आंध्र प्रदेश एंड ट्रिब्यूनल काउंसिल इज इन मिजोरम, एंड absence of village panchayat is at Meghalaya. So D is the right answer. Moving to 7th question. If panchayat is dissolved, election are to be held within 6 months. C is the right answer. The duration of panchayat is 5 years and fresh election to constitute a panchayat shall be completed before the expiry of its term, or in case of dissolution before the expiry of a period of 6 months from the date of its dissolution. 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए. Question number 8. In India the first municipal corporation was set up in which among the following? तो कहाँ पे सेटअप हुई थी? That was set up in Madras. That was set up in Madras in the year 1688. Question number 9. The Constitution Act 1992, which aimed at promoting the Panchayat Raj institutions in the country, provide for which of the following?
और ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं एंड वी हैव टू करेक्ट कोड। इनमें से कौन से ऑप्शन को वो सपोर्ट करते हैं? दैट 2 एंड 3rd, मतलब ये कि द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ टू कंडक्ट द पंचायत राज इलेक्शंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये दो ही 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायत राज में इंक्लूडेड है कि उनका इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस इलेक्शन। और जो फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग इसलिए है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कम्स अंडर द 74th अमेंडमेंट एक्ट, ना कि 73 अमेंडमेंट में आएगा। दैट्स व्हाई द वन इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 10th, in the area covered under the Panchayat extension to the Schedule Area Act 1996, what is the role और पावर ऑफ ग्राम सभा? तो दो ऑप्शन दे रखे हैं अपने को यहाँ पे, और ये क्या कह रहा है कि ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट द एलिनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल एरिया। यस, दे हैव द पावर। एंड ऑप्शन 2, ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ minor forest produce. Yes, they have their ownership. Third, the recommendation of Gram Sabha is required for granting the prospecting license or mining lease for any mineral in the scheduled area. Yes, they have to grant license from the Gram Sabha. So D is the right answer. Moving to next question, question number 11. Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Act 2006, who shall be authority to initiate the process of determining the nature and extent of individual or community forest right or the both? That is ग्राम सभा। ये सारा अधिकार सिर्फ ग्राम सभा के पास है। Section C of the Forest Dweller Act provides a transparent 3-step procedure for deciding on who gets the right. Firstly, the Gram Sabha make the recommendation who can cultivate land on for how long and which minor forest produce is collected. And the Gram Sabha played this role because it is a public body where all people participate. Hence, it is full democratic and transparent. The Gram Sabha recommendation goes through 2 stages of screening committee, the taluka and the district level. Question number 12. The government enacted the Panchayat extension to Schedule Area (PESA) Act in 1996. Which one of the following is not identified as its objective? कौन सा इनमें से वो आइडेंटिफाई नहीं करता? टू फ्री ट्राइब पीपल्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये नहीं है। The PESA Act does not identify the freedom of tribal people from exploitation as its objective, but it is the automatically becomes a byproduct of its objective. 13. The fundamental objective of Panchayati Raj is to ensure which one of the following? Fundamental objective क्या है पंचायती राज के? That given in option 1, 2, 3, that people's participation in development, political accountability and democratic decentralization. Financial mobilization is not the objective of Panchayati Raj system. Now, questions under the topic public policy. Question number 1. Which one of the following are the objective of the Commission for Agriculture Cost and Prices? तो इनमें से कौन सा ऑप्शंस हैं जो 4 दिए हुए हैं? दैट इज ऑप्शंस in not the objective of CACD, that is 1, 2, 3. CACP, to establish agriculture prices, to ensure meaningful real income level to the farmer, and to protect the interest of consumer by providing essential agriculture commodity at reasonable rate through public distribution system. Question number 2. Which of the following are the matter on which a constitutional amendment is possibly only with the ratification of the legislature if not less than 1/2 of the state? कौन कौन से वो मैटर हैं? That matters are election of the president, representation of states representation of state in parliament, and any of the list in the 7th schedule. All these 1, 2, 3 only. Abolish of the legislative council of state, ये नहीं है क्योंकि क्यों नहीं है?
क्योंकि अंडर आर्टिकल 169 इट हैज बीन मेंशन दैट पार्लियामेंट कैन क्रिएट और एबोलिश द काउंसिल इफ दैट every state pass a resolution to do so with special majority. So 4 is not comes under this rectification. Yeah. Question third. Consider the following statement regarding the National Human Right Commission. National Human Right Commission के regarding statement करो और which of the statements are correct. इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं. इस चेयरमैन मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है. और ये फर्स्ट और फोर सिर्फ यही इसके राइट हैं. सॉरी. एंड थर्ड, इट्स पावर आर ओनली रिकमेंडेड इन नेचर. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट. बाकी 2 एंड 4 इनकरेक्ट क्यों है. 2 का इनकरेक्ट होने का रीजन है इट इज नॉट मैंडेटरी. It is not mandatory that each state must have a state human rights. ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है और अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा. बट स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन इज आल्सो द मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. तो जो पॉसिबली जो करेक्ट आंसर होना था वो 1 एंड 3 है. ये 4th भी करेक्ट ही है लेकिन ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ इसलिए वी आर द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 4. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेचर डू नॉट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. दैट इज ऑप्शन ए द वाटर सेस एक्ट 1977. ऑल अदर्स आर deals with the protection of environment. Question fifth, we have to match the list 1 with the list 2 and correct answer to this question is given in code B, that Ministry of Industry comes under the have publication of whole price index and Central Static Organization publish the national account statistics and Reserve Bank of India makes the report on currency and finance and Ministry of Finance release the economy survey. Question number 6. The consultative committee of members of parliament for railway zone is constructed by the Ministry of Parliament Affairs. Question number 7. Which of the following statement is not correct. इनमें से कौन सा statement correct नहीं है. That is among all the states of India, Maharashtra publishes the large number of newspaper. ये वाला statement नहीं है. महाराष्ट्र की जगह होना था मध्य प्रदेश publish the largest number of newspapers. Moving to question number 8. With reference to Indian public finance, consider the following statements. और ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं. दैट स्टेटमेंट 2 and 3 आर द करेक्ट. और ये तो स्टेटमेंट 2 and 3 आर द करेक्ट. कौन कौन से ये वाला द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, ए पब्लिक अकाउंट एंड ए कंटिजेंसी फंड फॉर ईच स्टेट. और तीसरा वाला द appropriation and disbursement under the railway budget are subject to the same form of the parliamentary control as other appropriation and disbursements. Question number 9. The Archaeology Survey of India is attached office of the department or ministry of किस department के अंदर आती है. That comes under the Ministry of Culture. The Archaeology Survey of India, established in the year 1861, is a department of Government of India and attached to the Ministry of Culture. Archaeology Survey of India is responsible for archaeological studies and preservation of archaeological heritage of country in accordance with the various acts of the Indian Parliament. Question number 10. We have given assertion and reasoning. In assertion says the Central Rural Sanitation Program was launched in 1986 to improve the quality of life of rural people in India. Reasoning कह रहा है rural sanitation is subject in the concurrent list in the Constitution of India.
तो अब देखो कि जो असर्शन है वो तो ट्रू है, लेकिन जो रीजनिंग दी हुई है वो फॉल्स दी हुई है। सो हेयर सी इज द आंसर, क्योंकि जो रूरल सैनिटेशन है इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, बिकॉज पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। सो रीजनिंग दो जो कि गिवन थी वो गलत होगी। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग, इनको कंसिडर करना है। डिस्प्यूट विद मोबाइल सेलुलर कंपनीज और मोटर एक्सीडेंट केसेस, पेंशन केसेस, फॉर विच ऑफ द अबव वाला लोक अदालत हेल्ड, इन किसके लिए लोक अदालत हेल्ड की जा सकती है। फॉर ऑल द अबव केसेस वी कैन हेल्ड द लोक अदालत। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट गिवन है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। और देर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एनकरेज इक्वलिटी पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ, ऐसा नहीं है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रोविजन देता ही है फॉर इक्वल पे एंड इक्वल, तो वन इज अ रॉन्ग। Second, the Constitution of India do not define the backward class. Yes, in the whole Constitution we have no word regarding the backward class. So only the statement 2 is correct. Sorry, B is correct. So question number 13. We have again two statements and which of the above statements are correct. तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट है। ग्रुप 10 कमिटी डील्स विद द इश्यूज ऑफ चाइल्ड लेबर, और जो पहले वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है तो NCLF जो दे रखा है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, इज रन बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नहीं होगा, उसकी जगह होगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग। Moving to question number 14, consider the following statement regarding a metropolitan planning committee. We have three statements. Which of the following are the correct? So, statement 1 and 2, that is, it constitute under the provision of the Constitution of India. And the second, prepare the draft development plan for the metropolitan area. और ये जो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है वह गलत है। Committee have the metropolitan planning do not have a sole responsibility for implementing government sponsor scheme in metropolitan area, उसकी कोई sole responsibility नहीं होती है। Question number 15, the Parliament Committee on Public Account, we have three statements and which of the statements are correct, कौन कौन से statement correct हैं, तो only 2 and 3 correct हैं। कौन कौन से, the scrutinize the appropriation and finance account of the government, yes, ये इसी का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम है, उस कमेटी पब्लिक अकाउंट का काम है, कमेटी ऑन एंड एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कैग ऑफ इंडिया, ये इसका काम है। और ये जो कमेटी का कह रहा है कि दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर ऑफ लोकसभा, ये गलत है। गलत इसलिए कि द कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 15 मेंबर होने चाहिए। एंड द फंक्शन ऑफ कमिटी इज टू एग्जामिन, ये पढ़ ही लिया अपन ने कि 2 फंक्शंस होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 16, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू एंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 3 अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से हैं। सो द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट होता है इनका सबका कि पीपल्स पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये तीनों के तीनों इसके ऑब्जेक्टिव हैं। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज। सो दिस इज ऑल इन पंचायती राज। नाउ वी कवर द टॉपिक ऑफ judiciary and legal rights. Judiciary and legal rights. So in judiciary we have first question, the power of Supreme Court of India to decide dispute between center and the state falls under its original judiciary. Question number 2, when the
when the Chief Justice of High Court acts in an administrative capacity, he is subject to discriminatory power of the governor of the state. That is C. Question number third. According to the Constitution of India, the term district judge shall not include the tribunal judge. It shall not include the tribunal judge. Under Article 236 of the Constitution, the term district judge includes the judge of city civil court, additional district judges, joint district judge, assistant district judge, chief justice of small cause court, chief presidency magistrate, additional chief presidency magistrate, session judge and assistant session judge, and additional session judge, but not the tribunal judge. Question number 4, in we have assertion and reasoning. In assertion says, willful disobedience or non-compilation of court order and use of derogatory language about justice behavior amounts to contempt of court. And reasoning दे रखा है, judicial activism cannot be practiced without arming the judiciary with punitive power to punish the contemptuous behavior. तो इस क्वेश्चन के अंदर both A and R individually true, but reasoning is not the correct explanation of the assertion. Here is the B is the right answer. Question number 5. The Supreme Court of India tender advice to the President on matter of law or fact only if he seeks such an advice. जब उसको अगर जरूरत है तभी, और it is mentioned or it is as per provision under the Article 143. Question number 6. Consider the following statement regarding the High Court of India. We have the 3 points, and which of these statement are correct? इनमें से कौन से statement correct हैं कि there are 18 High Court in the country, और नहीं 18 नहीं है, अपने पास 21 है. So पहला तो वैसे ही wrong हो गया. और 3 of them have judiciary over more than one state, ऐसा कुछ नहीं है. And no union territory has high court of its own, ऐसा भी नहीं है. इसका एग्जांपल है जैसे क्या बोलेंगे, नेशनल कैपिटल की खुद का भी तो हाई कोर्ट है, तो ये फॉल्स हो गया. 4th, जज ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड्स ऑफिस टिल द एज ऑफ 62. यस, जज ऑफ हाई कोर्ट होल्ड्स द ऑफिस टिल द एज ऑफ 62. दैट इज ओनली द डी ऑप्शन इज राइट. और यहाँ पे ये गलत इसलिए था क्योंकि ये 18 दिया हुआ है, 18 की जगह 21 होना था. फिर है कि देर आर 3 ऑफ देम हैव जुडिशरी ओवर मोर देन वन स्टेट. 3 नहीं है भाई साहब, देर आर 6 ऐसे हैं जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, गुवाहाटी, केरला, मद्रास, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. तो 6 स्टेट है, दे हैव जुडिशरी ओवर मोर देन वन स्टेट. तो यहाँ पे 3 नहीं होना था. और no union territory has high court of its own. Delhi is union territory, it has its own high court. So statement 3 is also the wrong. Moving to question number 7. The salary and allowance of high court the salary and allowance of judges of high court are charged to the consolidated fund of the state. Question number 8. They are charged to the consolidated fund of as per the Article 112 Part 3rd. Question number 8. The power to enlarge the judiciary of the Supreme Court of India with respect to any matter included in the Union List of Legislation Power rests with the Parliament. Question number 9. Which one of the following high courts have the terrestrial judiciary over Andaman and Nicobar Island? किसकी है भैया? That the union that is Kolkata. The Union Territory of Andaman and Nicobar Island comes under the jurisdiction of High Court of Calcutta. Under its extension, Judiciary Act
of 1953. क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इनमें सारे के सारे जितने भी दिए हैं दे ऑल आर ट्रू, और इनको एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। द हाई कोर्ट क्रिमिनल द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। यस, डिस्ट्रिक्ट की सबसे क्रिमिनल कोर्ट, सबसे बड़ी क्रिमिनल कोर्ट कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होती है। द डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेंट विद द हाई कोर्ट्स। यस, person to be eligible for appointment at district judge should be an advocate or a pleader of 7 years standing or more, or an officer in judicial service of the union or the state. And fourth कह रहा है when the session judge award a death sentence it must be confirmed by the high court before it is carried out। ये भी बिल्कुल सही है। Question number 11, according to the National Human Rights Commission Act 1993, who among the following can be chairman? The chairman is only a retired Chief Justice of India। कि ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही हो सकता है। और वो अपॉइंटेड किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी कंप्रोमाइज। उसमें होते हैं पीएम, स्पीकर ऑफ लोकसभा, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। सो प्रेसिडेंस के वारंट में दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी that the judges of Supreme Court, then Deputy Chairman, then Deputy Chairman of Rajya Sabha, then Attorney General of India, then Member of Parliament। और इस वारंट की प्रेसिडेंस में सबसे ऊपर कौन है, दैट इज प्रेसिडेंट, उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद आते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर आते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, और फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 9th नंबर पे आते हैं। ये जजेस ये 9th पे आते हैं इन द प्रेसिडेंस, और ये डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्य 10th, उसके बाद अटॉर्नी जनरल एट रैंक 11, और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट रैंक 21। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। नहीं, 25 नहीं है, 24 हाई कोर्ट्स इन द इंडिया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये तो गलत है। पंजाब एंड हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव कॉमन हाई कोर्ट, बिल्कुल सही है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज हाई कोर्ट ऑफ इट ओन। यस, ओनली द स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सो द ओनली द स्टेटमेंट ट्रू, द ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न चीफ जस्टिस and the administrative expenses are charged on the consolidated fund of India। बिल्कुल सही है कि उनका जो स्टेटमेंट 2 में है बिल्कुल सही दिया हुआ है, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत इसलिए है कि क्योंकि इज नॉट करेक्ट एज पर आर्टिकल 138 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन एनलार्ज द jurisdiction and power of Supreme Court with respect to any of the matter in the union list, whereas Supreme Court jurisdiction with respect to any other matter can be enlarged by special agreement between Government of India and Government of concerned state। तो ये cannot जो शब्द है इसकी वजह से गलत है, ही द पार्लियामेंट हैज़ द पावर। In question number 15, assertion in India every state has a high court in its territory। रीजनिंग दे रखी है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ए हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। तो बिल्कुल सही है कि बोथ assertion and reasoning are individually true and R is the correct explanation of A। Question 16, which was who was the Chief Justice of India when public interest legislation was introduced to the Indian judiciary system। उस टाइम भैया चीफ जस्टिस कौन थे? एट दैट टाइम द चीफ जस्टिस वाज PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
Those statement, which of the following statement are correct? बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो रॉन्ग क्या है ये देखते हैं। स्टेटमेंट इज वन रॉन्ग इसलिए है कि इनकरेक्ट बिकॉज आफ्टर रिटायरमेंट ए परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट shall not pledge or act in court of before any authority of India except the Supreme Court or High Court other than the High Court in which he held his office। वहाँ पे वो अपना अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता, तो इसलिए ये गलत है। द पर्सन हु हेल्ड द ऑफिस एज अ परमानेंट अकाउंट कैन नॉट प्लेज और एक्ट इन कोर्ट बिफोर एक्सेप्ट जो देर कैन एक्सपेक्ट सुप्रीम कोर्ट, नहीं सुप्रीम कोर्ट ही नहीं और दूसरे स्टेट में दे सकता है वो, तो इसलिए इसकी वजह से ये गलत हो गया। एंड ये जो दूसरा दे रखा है स्टेटमेंट वो क्यों गलत हो रहा है? दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 a person is not qualified for appointment as a judge of high court in India unless he has for at least 10 years held a judiciary office in the territory of India, जब तक कि वो 2 साल तक कि हाई कोर्ट में वर्क नहीं किया हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन इज नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए हाई कोर्ट ऑफ इंडिया अनलेस ही हैज फॉर 5 years, नहीं होगा यहाँ पे 10 years होना चाहिए, इसलिए रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 18 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो हियर statement 1 is only the correct. The mode of removal of judges of high court in India is same as the removal of judge of supreme court। बिल्कुल वही तरीका है। After the retirement from the office, a permanent judge of high court cannot pledge or act in any court or before any authority of in India। ऐसा नहीं है, he can pledge in supreme court or other state high courts। ये इसका सही आंसर है। In question number 19, how many high courts in India have judiciary over more than one state? तो कितने states में है? That is union territory are not included। अगर union territory को नहीं include करते हैं तब we have only the 3, और वो हो जाएंगे फिर that is बॉम्बे, गुवाहाटी एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो ये 3 हो जाएंगे। बॉम्बे के अंदर आता है महाराष्ट्र एंड गोवा, गुवाहाटी के अंदर आता है असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। एंड इन पंजाब एंड हरियाणा भी है पंजाब एंड हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 20 विद रेफरेंस टू लोक अदालत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हुए, इनमें से कौन सा सही गलत है? ओनली द स्टेटमेंट इज 1 ट्रू एंड award made by Lok Adalat is deemed to be a decree of civil court and no appeal lies against there to any court। बिल्कुल सही है। मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स आर नॉट कवर अंडर लोक अदालत, बिल्कुल नहीं, वो भी सॉल्व किए जा सकते हैं अंडर द जुडिशरी ऑफ लोक अदालत। क्वेश्चन नंबर 21 विद रेफरेंस टू लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कि सारे के सारे जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे करेक्ट हैं। So D, Lok Adalat have the jurisdiction to settle matter at pre-litigation stage and not those matter pending before any court। Lok Adalat can deal with matters which are civil, not criminal in nature। और every Lok Adalat consists of of either serving or retired justice officer only and not any other person। बिल्कुल सही है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं? दैट इज गिवन इन ऑप्शन 1 and 2 कि डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 or more स्टेट एंड ए डिस्प्यूट बिटवीन 2 or more स्टेट। यही उसके ओरिजिनल जुडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हैं। ये जो डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ आइदर, ये उसके ओरिजिनल जुडिशरी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट।
दिए हुए हैं, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्या कह रहे हैं, द ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल, डिलिमिटेशन का डिसीजन किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। व्हेन द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेशन, दे कैन नॉट बी अफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन द orders. So C is the right. Question number 24. What is the provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India? चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से फिर करेक्ट बताना है. Only the 1 and 3 are the correct. While appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India, and the salaries of High Court are charged on the Consolidated Fund of India, to which legislature does not have to vote. उसको legislature को वोट नहीं करते. बिल्कुल सही है, 1 and 3. Question number 25. With reference to National Legal Service Authority, consider the following statement. दो ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है? That is, both the statements are true. Its objective, National Legal Service Authority के बारे में बात कर रहे हैं कि its objective is to free and competent legal service to weaker section of the society on the basis of equal opportunity. बिल्कुल सही इसका ऑब्जेक्टिव है. It issues guidelines for the state legislative authority to implement the legal programs and schemes throughout the country. Both the statements are true. Now the questions and the topic, the legal rights. The first question is, prohibition of discrimination on ground of religious act under the Article 15 of Constitution of India is a fundamental right classifiable under ये अपने ऑप्शन दे रखे हैं, that is classified under the right to equality. Now question number 2, consider the following statement. No one can be compelled to sing the national anthem since. 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, फिर पूछा गया है कि only 1 and 3 are, कि no one can be compelled to sing the national anthem. Because it will violate the right of freedom of speech and expression. और तीसरा, there is no legal provision obliging anyone to sing the national anthem. Question number 3, a British citizen stay in India cannot claim the right. इनमें से कौन सा claim right नहीं कर सकता? It cannot claim the freedom of trade and profession. ये right claim नहीं कर सकता, और सारे के सारे he can claim equality before the law, protection of life and personal life, liberty and freedom of religion. फिर है क्वेश्चन, द फॉलोइंग न्यूज आइटम एप्रिशिएटेड इन नेशनल डेली. कुछ दिया हुआ कि कुछ पार्लियामेंट के बारे में है, तो पार्लियामेंट रेफर इन दिस कोर्ट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड कोर्ट करती है? दैट इज रिलेटेड टू कुवैत. और ऑल मेल पार्लियामेंट रिजेक्टेड ग्रांटिंग द वुमेन फुल पॉलिटिकल राइट, एंड द वोट वाज 32-30 with 2 abstentions, with 64 member absent, and the bill needed 33 votes to pass. ये को वहाँ की बात कर रहा था. क्वेश्चन नंबर 5, in the Indian Constitution the right to equality is granted by the 5 articles. They are, उनमें से कौन से आर्टिकल हैं? They are given from the article 14 to 18. और they are in 6 groups of fundamental right. हमें पता है कि 6 ग्रुप है फंडामेंटल राइट के, और राइट ऑफ इक्वलिटी गिवन फ्रॉम 14 to 18, राइट ऑफ फ्रीडम गिवन फ्रॉम 19 to 22, right against exploitation is given 23 and 24, right of freedom of religion is given in 25 and 28, cultural and education right are given in 29 and 30, right to constitutional remedies is given in article 32. All these. Question number 6, which one of the following article was described by the Dr. B.R. Ambedkar as the heart and the soul of the Constitution? These are right to constitutional remedies. So all these in this chapter. So if you like this video, please subscribe to it.
If you feel it is valuable, so share with your friends. And thank you watching this video. Thank you very much.